Good afternoon, everyone. Welcome to the last session of the month of the year, and Happy New Year in advance. Happy New Year, everyone. Hello, good afternoon. Nikun sir, I've sent you an invite. Please accept and join the stage. We'll end our year and the month with the monthly Nifty expiry session with Nikunj Patwa sir, and then we'll have a fresh start tomorrow. Wish prosperous new year, profitable, and a happy new year for everyone. Happy new year, everyone. Hope year end with the profit. Same, Adiji, that is our expectations, and we try our best for the same. Nikun sir, can you hear me and see me? Hello, Nikun sir. Hello everyone. Good afternoon. Welcome to the last session. I can see more people are joining in. After that, we'll start the session as soon as Nikun sir is ready and good to go. Nikun sir, can you hear me? Guys, I'm just checking in with Nikon sir. I can see queries are coming in. Hello everyone. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay. Okay. Just give me a minute. I just share my screen and we are good to go. Sure. Talk about NVCC share. Definitely, we will take up a lot of stock queries and try to give a Nifty trade as well, Fin Nifty trade as well, since it's the Fin Nifty monthly expiry. Hoping to see some momentum. And for the afternoon session, we have Nikun sir with us. Feel free to drop your queries in the chat. अगर हमारा index पे ज़्यादा focus नहीं होगा, then we'll take up some stock queries. We can see you, sir. Happy New Year in advance, and handing over it to you. You can start the session. Sure. Good afternoon, everyone, and season greetings. Happy New Year in advance to everyone, to you, Anuj, and welcome to the monthly expiry of Fin Nifty, a weekly contracts for any. So last Tuesday of this month, and it's a monthly expiry, but ऐसा लग नहीं रहा है कि monthly expiry है. The index has been trading in a narrow band. I think Fin Nifty की अगर बात करें तो the index अगर हम एक 15 मिनट की भी चार्ट लगाए तो लास्ट ऑलमोस्ट 1 आवर से इधर इंडेक्स हैज बीन ट्रेडिंग इन 50 पॉइंट बैंड. मंथली एक्सपायरी ऐसा लग भी नहीं रहा है. नीचे में इट इज नॉट ब्रेकिंग 23,485 एंड ऊपर में इट इज फेसिंग हर्डल नियर 23,535 540. सो एक 50 पॉइंट्स का ही बैंड है. इवन ओआई कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो मैक्सिमम ओआई ऑन द पुट साइड is near at 23,500 put, and maximum call OI is at 23,550 call. So as per the OI concentration also, it is hinting that the index would trade within this band only. But so as of now, सुबह से our stance has been negative. Sell on bounce stance हमारा intact है. In the morning we did initiated a bear put spread as well to play that downswing. Nifty comparatively is better placed. अगर Nifty की बात करें तो relatively it has outperformed today. आज almost it has erased all its intraday losses, and at one point it was trading in the green as well. ऊपर में 23 या 680-90 का हाई करके आया है. तो
मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म थोड़ा सा एक सेटअप पेन में ही है, लोअर लोस फॉर्म हो रहा है गैप डाउन के बाद 4 दिन का 5 दिन का कंसोलिडेशन के बाद आज फॉलोअप सेलिंग आई है, तो एक इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग का ब्रेकडाउन भी है, तो एज ऑफ नाउ सेल ऑन बाउंस ही है, बट आज कंपैरेटिवली निफ्टी इज बेटर ऑफ प्लेस देन बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। सो निफ्टी की बात करें तो ऊपर में जब तक 24,000 के ऊपर क्लोज नहीं आता है जो गैप एरिया है, तब तक एक सेल ऑन बाउंस स्टैंस ही कंटिन्यू रहेगा, एंड नीचे में बिलो द स्विंग लो ऑफ the November 21st November low, that is 23,260, there could be some further corrective moves. तो जब तक 24,000 नहीं क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड होता, तो तब तक सेल ऑन बाउंस स्टैंड शुड कंटिन्यू इन निफ्टी एज वेल। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो इवन दैट हैज बीन ट्रेडिंग इन अ नैरो बैंड, ऊपर से काफी करेक्टिव मूव आया है लास्ट 53,700 से, वी हैव सीन अ शार्प करेक्शन एंड देन 6-7 days of consolidative move, and then we have seen some follow-up selling. हालांकि आज the intensity of the fall is missing, mainly due to थोड़ा सा holiday vibes है in the market. There is not much activity in either indexes. Stock-wise, broader markets, the stock has been relatively outperforming, and selective packs of stocks are doing well. Not all the stocks are performing. So आज rail PSUs में अच्छा action था। तो बैंक निफ्टी की बैक टू बैंक निफ्टी आई थिंक नीचे में एक सपोर्ट है 50,000 राउंड फिगर 50,500, एंड ऊपर में जब तक 51,500 के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक इवन बैंक निफ्टी साइडवेज टू नेगेटिव बायस रहेगा इन बैंक निफ्टी एज वेल। नीचे में 50,500 एंड देन 50,000 इज द नेक्स्ट सपोर्ट जोन। निफ्टी फाइनेंशियल निफ्टी की बात करें अगेन इट इज ट्रेडिंग एट 23,508, तो I think as of now हमारा stance negative ही है, तो what the strike that is on our radar is 23,600 का put option. As of now it is quoting at 93 odd, so we'll wait for a bounce towards 23,530, then we'll enter into the trade अगर trade setup बनता है। तो as of now एक narrow band में, so there is no hurry in getting into a trade where we know that the we have to earn, जहाँ पे 15-20 पॉइंट का ही मूव अगर आता है तो दैट इज द मैक्सिमम दैट वी कैन एक्सपेक्ट गोइंग बाय जो लास्ट 3-4 घंटे से हुआ है इन दी मार्केट, तो उसको बेंचमार्क लेते हुए मैक्सिमम 15-20 पॉइंट्स का ही मूव आ सकता है अगर ऑप्शन में आता है तो विल वेट फॉर अ बेटर एंट्री पॉइंट वेर विल वेट फॉर अ बाउंस टुवर्ड्स 23,530 ऑड लेवल्स, 530-535, तब ये पुट में एंट्री लेंगे। तो एज ऑफ नाउ द स्ट्राइक ऑन द रेडार इज 23,600 पुट, तो वो हमने बता दिया है। तो स्पीकिंग ऑफ स्टॉक्स जो आई थिंक विच आर लुकिंग गुड, सो वन आई विल शेयर अ CDI आइडिया दैट वी हैव शेयर्ड टुडे। तो एक पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट है, दैट इज पॉलिसी बाजार, PB फिनटेक इज द स्टॉक, हमारा CDI आइडिया वी हैव शेयर्ड आल्सो। सो टिल द टाइम अगर इंडेक्स में ज्यादा मूव नहीं है तो वी कैन see some momentum in select stocks wherein PB fintech is policy bazaar। पूरा निफ्टी के करेक्टिव मूव में द स्टॉक हैज नॉट करेक्टेड दैट मच, ऊपर से 2200 से हार्डली 100 पॉइंट का करेक्ट हुआ है, विच इज नथिंग, 3-4% का ही करेक्शन होता है, जबकि निफ्टी 26,000 से 23,000 के आसपास आ गया है। सो relatively outperform कर रहा है PB fintech, तो we are recommending a buy in PB fintech, keeping it's just CDI idea, so 1 week का time horizon रहेगा। It is giving a classical pole and flag breakout, and नीचे में 2025 के सपोर्ट से ऊपर में 2220 के टारगेट के लिए PB fintech we are recommending a buy in that, keeping a support of 2025 and target of 2220, that is 2220। so that is a target। CDI idea है, तो एक वीक के परस्पेक्टिव से we have to play in PB fintech। So I think we have shared some data points with regard to FinNifty की VWAPs की अगर बात करें data points की, तो weekly VWAP is near 23,750 and we are almost 200 points lower than the weekly VWAP, and monthly VWAP तो काफी ऊपर है, 24,300 है, and we are almost 1,000 points lower than the weekly monthly VWAP as well, which is why हमारा stance एक negative है, क्योंकि capped upside है and sell on bounce stance हमारा continue रहेगा।
So अभी थोड़ा सा एक 10 पॉइंट्स का रिकवरी आया इन निफ्टी, बट नथिंग मेजर. 23,515 ही है. तो as of now the put is on radar is 23,600 put, so I don't think I need to share the entry level as such. अगर इंडेक्स स्पॉट के हिसाब से विल ट्राई टू कैप्चर a trade setup in the underlying option. So this is how it is. PB Fintech, we have recommended a buy. CDI idea हमने दिया है, and I think we have shared some crucial important levels on all three indices. And if there is any BTST, we'll definitely share. अगर कोई BTST idea आता है तो we'll definitely share on that as well. So as of now, this is the stance. Sell on bounce stance है 23,535,540 का हम wait कर रहे हैं. 20-30 points का एक bounce. We are going in the money so that we don't get into the trouble with regards to the time decay. So in the money option है 23,600 and the spot is 23,515. So we'll wait for 20-25 points bounce and then we'll enter into the put if there is a bounce. Because there is no momentum as such कि current market price पे दे and we'll see a follow through. The whole trading session आज is like everyone is celebrating early holidays, so hardly 40-50 points का ही range in Nifty. Nifty has been relatively doing good. So I think in the meantime we can take few queries. अगर कोई BTST रहता है तो we'll definitely share. As of now we shared a CDI idea in PB Fintech, that is Policy Bazaar, 2220 के target and 2025 का support. Sure, sir. I guess I'll just scroll up to the top. Oro Pharma bought at 1298. I think you should continue to hold pharma as a sector. Last pura week and even including the 2 days of this week and last whole week, pharma has relatively outperformed all the indices. So I think he's entered in a very good spot. Entry price अच्छी है. So I think keeping a support of 1300, continue to hold and look for 1380 and 1390 on the higher side. So our entry point is good to trail your stop loss in the money so that you don't lose in this trade. Sir, NBCC. So NBCC also एक नीचे से अच्छा रिवर्सल दे रहा है, almost kind of a double bottom, even triple bottom कह सकते हैं. तो इनसाइड बार है लेकिन एक अच्छी रिकवरी देखी गई है आज, ऑलमोस्ट 4-5% की एक रिकवरी है. तो नीचे में 87 के सपोर्ट से आप लॉन्ग कर सकते हैं. अगर आपको फ्रेश ट्रेड लेना है तो यू शुड डेफिनेटली बाय इनटू दिस, कीपिंग अ सपोर्ट ऑफ 87 एंड लुक फॉर 98 and 102 on the higher side in NBCC. आपका ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो कीप अ सपोर्ट ऑफ 87 एंड लुक फॉर 98 ऑन द हायर साइड. अगर फ्रेश लेना चाहते हैं तो यू शुड डेफिनेटली गेट इनटू इट. The classical triple bottom pattern on the daily scale. So you can expect a pullback move towards the 50-day exponential moving average, which is 98.90. Sir, please suggest what to do with Cummins India. It rose to 2% today. Also suggest, okay, that's two different questions. We'll focus on Cummins India first. Okay. So Cummins, although negative swings ही बना रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम कंटिन्यू है. आज कल अच्छा ब्रेकडाउन आया था, आज थोड़ा सा पुल बैक है 2% का. लेकिन जब तक ऊपर में 3400 और 3500 3430 के ऊपर क्लोज नहीं आता, I think it should it's a sell on bounce kind of a stance on Cummins. हालांकि नीचे से आज रिकवरी आई है, बट ऊपर में जब तक 3450 3460 के ऊपर क्लोज नहीं आता तब तक एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं बोल सकते. तो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव स्टैंस है. नीचे में 3200 का इमीडिएट सपोर्ट है, ऊपर में 3450 का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है. अगर वो 3450 के ऊपर क्लोज आ जाता है तो एक द पुल बैक कुड गेट एक्सटेंडेड टुवर्ड्स 3600 आल्सो.
Sir, your view on Zomato? So Zomato is our all-time favorite stock, and it's a must-have in the portfolio. I always say this. So अगर trading पर से है तो 270 के support से long कर सकते हैं and look for 295 on the higher side. अगर investment के लिए तो you should definitely do a stock SIP kind of a thing in Zomato. Every month you can buy few number of shares every month. So it's a good SIP stock. It's a must-have in your portfolio. अगर ट्रेडिंग पर से है स्विंग ट्रेड तो 270 के सपोर्ट से आप एंट्री कर सकते हैं एंड लुक फॉर 290 295 ऑन द हाई साइड जोमेटो. Sir, I have bought Kofo January 10,600 call at 72. I think Coforge is relatively outperforming, तो I think आप बने रह सकते हैं कॉल ऑप्शन में. आपने अच्छा you are on the right track of the trend. So I think जब तक Coforge spot level I'll suggest, क्योंकि आपने काफी OTM कॉल बाय की है, तो I think but टाइम वैल्यू फिलहाल के लिए आपके साइड में है, तो द होल मंथ इज देयर. बट नीचे में स्पॉट लेवल जब तक 9400 के नीचे क्लोज नहीं आता कोफोज, तब तक you should continue to be long in Coforge, be it by option or in cash. तो I think spot level में 9400 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए एंड ऊपर में फॉर टारगेट ऑफ द स्टॉक का टारगेट 1100 के टारगेट कीजिए. तो वन थिंग आई थिंक जो स्टॉक ऑप्शंस करता है ना, तो आई थिंक यू शुड बी एट द मनी और स्लाइटली इन द मनी, बिकॉज ओटीएम अगर स्टॉक एक हफ्ता भी कुछ नहीं करेगा, साइडवेज रह जाएगा, तो यू लूज आउट ऑन द टाइम वैल्यू फैक्टर. सो वही सेम चीज अगर एट द मनी या इन द मनी होगा तो यू वोंट लूज द टाइम डीके, वोंट हर्ट यू व्हेन यू आर डूइंग स्टॉक ऑप्शन. सो अगर जैसे जो प्राइस चल रहा है उसके एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस है, उसके एक नीचे के लेवल का भी स्ट्राइक लेंगे तो कॉल या पुट विच एवर यू आर डूइंग, कॉल ले रहा है तो एक स्ट्राइक नीचे, पुट ले रहा है तो एक स्ट्राइक ऊपर. सो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर वे ऑफ प्लेइंग स्टॉक ऑप्शन एंड मेकिंग मोमेंटम. आपको जल्दी मिलेगा और टाइम डी के आपको हर्ट नहीं करेगा. ऑल्दो द कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन वुड इंक्रीज बिकॉज इन द मनी प्रीमियम्स आर हायर देन द ओटीएम, बट आपको एक टाइम डीके का फैक्टर हर्ट नहीं करेगा. Sir, GeoFin at CMB, which looks like a good support on DTF for portfolio. जियो पोर्टफोलियो के लिए आई थिंक थोड़ा सा इट्स अ गुड बाय. इफ यू आपका 3-4 इयर्स का होराइजन है तो इट्स अ गुड बाय इन जियो फाइनेंस डेफिनेटली. बट सपोर्ट तो आई थिंक ऑलमोस्ट अपने 6 to 8 मंथ लो पे ट्रेड कर रहे हैं, तो स्विंग लो भी ट्रेड हो गया है, तो आई थिंक नीचे में और थोड़ा सा करेक्टिव मूव आ सकता है. बट 290 या 288 अगर ट्रेडिंग पर है तो 290 इज अ गुड सपोर्ट टू एंटर. एज ऑफ नाउ थोड़ा सा नेगेटिव ही है, गैप डाउन के बाद 3 दिन करेक्टिव मूव के बाद 4 दिन कंसोलिडेशन एंड आज वापस ब्रेक डाउन आया है नीचे की तरफ. तो आई थिंक द बेरिश मोमेंटम थोड़ा सा और कंटिन्यू रह सकता है. अगर इन्वेस्टमेंट के लिए 3-4 इयर्स है तो इट्स अ नो ब्रेनर, यू शुड हैव इट. बट ट्रेडिंग पर से वेट फॉर एंट्री पॉइंट नियर 280 285. Sir, Balakrishna Industry for short term. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने आज अच्छा ब्रेकआउट दिया है. ऑलमोस्ट 6-7 दिन का कंसोलिडेशन और 2 वीक्स का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है. तो एंड 50 DMA को रिस्पेक्ट करते हुए आज उसके ऊपर क्लोज दिया है काफी दिनों बाद. तो 2850 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए. आई थिंक एक अच्छा मूव आ सकता है टुवर्ड्स 3000 एंड 3040 एज वेल. सो 2850 के सपोर्ट से look for 3010 and 3030 on the higher side. Balkrishna Industries. So again, I think I'll revisit the Fin Nifty. Spot चल रहा है 23,524.22
So, and the option that we are tracking is 23,600 put option, which is quoting at 89 and 90. So I think we'll wait for another 10 points, 10, 12 points का bounce towards 23,540. तो उसके तरफ आएगा तो we'll definitely try to enter the trade in 23,600 put. As of now, status quo, nothing doing as of now. So I think we'll continue with a few stock queries. अगर BTST कोई समझ में आता है तो we'll definitely try to give that. I think So Devyani International. yeah. I think Devyani after sharp what do you say move एक दो दिन का corrective move आया लेकिन एक वापस अपने support base पे आ गया है. So I think 179 and 177 is a good support zone for Devyani. तो अगर आपको entry करना है तो it's a good price to enter for a long trade and look for 197 on the higher side. So एक pullback move आया है, अपने breakout को retest किया है, अच्छा सा आज नीचे से recovery देखी गई है. तो keeping a support of 175, look for 192, 197 on the higher side in Devyani. So I think one BTST एक समझ में आ रहा है. ITDC cementation. So the stock has given a good range breakout of almost 1.5 months. So current market price is 350, 49. We can look to buy, do a BTST in ITD cementation because support of 537 and the target of 587. So you can buy at current market price at 550, 551. ITD cementation is a BTST recommendation from our side, with a support of 537 and look for 587 on the higher side. So one CDI idea we have shared, that is Policy Bazaar, and one BTST idea we are sharing right now, which is ITD cementation. Current market price is 550, keeping a support of 537 and look for 587 on the higher side. So stock specific action is continuing, but index may it's a very dull, lackluster day, almost feels like a holiday today as well. So stock specific action अच्छा है. So ITD cementation almost 2 weeks का high cross किया है, and it is respecting and keeping honoring the 50-day exposure moving average. So look for 587 on the higher side for a target, and 537 के support से you can buy ITD cementation as a BTST. Yeah, so I think if there is any other query, we can definitely Yes, take. sir, there are many. MCX is very low level. I bought it at 6666. Should I buy more on dips? Is it a good point to enter again? You bought it at 6666. So I think exchange theme, the whole BSE and MCX are doing relatively good. काफी sharp run up के बाद एक obviously थोड़ा सा pullback cannot be ruled out, but नीचे में जब तक 6000 break नहीं करता है, I think MCX फिलहाल is an uptrend only. पहली अपने 50-day exponential moving average के पास आया है. तो नीचे में अगर आपका short term के लिए trade set ले रहे हैं तो keeping a support of 5980, I think you should definitely get into MCX. Even for that matter, CDSL, PV, KFinTech, CDSL, KFinTech, BSC, CAMS, some capital market themes are relatively outperforming. So the outperformance will continue in the next year as well. So I think you should definitely be long in these counters. Sir, India Cement? So India Cement after a gap up, एक अच्छा move दे रहा है, almost trading near its all-time high level of 380, 386 का all-time high, and the
stock is soon going to merge into Ultratech Cement. So be noteful of that exchange filing. But standalone India Cement अच्छा लग रहा है. नीचे में 365, 368 के support से long hold कर सकते हैं. Given now that the monsoon season is behind us, and I think there is some media reports which is suggesting a price increase हो रहा है in the cement bag, almost 10 to 12 rupees per bag. So I think it's a positive for all the cement plays. India Cement is not far behind. So I think keeping a support of 360, 362, we can be on the long side in India Cement and look for target of 390 on the higher side. Sir, any opportunity in the Nifty since we are Nifty, nearing the session? The option is at 88, 23,600 put option जो हम track कर रहे थे. Index 23,520 है. When we started the session, it was 508, almost 8 points up move आया है. The option has decayed और थोड़ा सा correct हुआ है. When we started the session, 23,600 put was at 92, 93. Right now it is 89. So 4 point का move हुआ है in the whole 23 minutes that we are together. So इसमें क्या buy करेंगे, कहाँ बेचेंगे? There is no point in giving. Even we are surprised कि monthly expiry होने के बावजूद even Bank Nifty का monthly expiry was pretty similar, wherein it was almost a consolidation the whole day. And the same thing is happening in Fin Nifty. Fin Nifty almost last 4 घंटे का range is 40-45 points. The index itself. So option, I don't know how to play this range. मतलब 8 point का range है. तो I think अगर bounce में मिलता है, the index shows a bounce towards 23,535, 540, then we can buy the put option for 10, 12 points, 15 points के swing के लिए. But वो ना bounce भी नहीं आ रहा है. So current market price में दिया होता है start of the session, so it will be incurring losses. So there's 4 point का loss होगा. So there is no momentum as such in the option buying which is required. So there is no point giving a trade where we are only not convinced about the setup as such, and there is no setup as such. So थोड़ा सा अगर pullback आता, तो we would have definitely got the put near 70, 75. So we could have got a good risk reward in that. कि 15 point के stop से we could have got 10, 12 points का swing. So I guess we are ending this session with a no trade. Yeah. Not just session the year. हमने BTST although दिया है, we are given the BTST CDI, so technically we have a trade, but index में we don't. And saving our capital is important. We got a lot of information from you, from Arpit sir today. I hope कि next year ये सब हमारे काम आए and we can turn the tables and go back to the days when we used to have a streak of profitable sessions, 16, 18. I remember हमारे एक बार 21 profitable sessions were there, continuous. So I hope कि we can go back to that as soon as possible. The momentum this will be the end. I think last one month, I think everyone is trying to absorb the weekly changes जो हो गए, monthly contracts हो गए. So I think it will take another 1-2 months for everyone to absorb this change and get into the new routine that is though expiry है, बाकी सब monthly contracts है. So I think we have to give it a time and then we can put to go. The momentum होता तो definitely would have entered something. So guys, that will be all. Happy New Year on the behalf of Stockholm and Motilal Oswal team to all our members who are watching this stream. Happy New Year, sir, and let's have a great year ahead. Sure, have a good year ahead and Happy New Year again to you and the whole team and all the viewers. Have a good celebrate 31st today and I have a good year to the coming year. Have a good day, everyone.